complement of A. So complement of A, all the remaining term, that is 1, 3, 5. Can we say that? Yes, Getting ma'am. it? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. these things you must have learned in the in set chapter also. We have discussed all this. So it's same, okay? Because here also event is nothing but just a subset, a set we are having. Here also union, here union, intersection, all the concept will work like that. Okay. Now if we are having an event A or B, that means it represent the union. Okay, either A or B or both. Okay, if you are having A and B, how to find the union? You know that two sets you will be having, and how to find the union of two sets, that you know already. Yes or no? Yes, ma'am. Yes or no? Okay, if A and B will be there, that means we are talking about the intersection of A and B. Okay, now the next is A not B, B not A not B. Okay, that means A minus B, all element which is in A but not in B. Okay, all element which is in B but not in A, that is B minus A. So these things is exactly like the concept of set. Now this is important, mutually exclusive event. Two events will be mutually exclusive event when their intersection will be nothing like just 5. There is nothing in common in both those sets, then only we can say that both are mutually exclusive. For example, suppose we are rolling a die and the sample space is 1 to 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now we are having event A getting, again I am taking even numbers, and there is event B of getting odd numbers. So you can see the set A element from set A will be even number 2, 4, 6, and set B will be 1, 3, 5. Okay, there is nothing in common. If we will compare A and B, and if we will try finding intersection, can we see the intersection will be 5? Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. And if the intersection is 5, now we are saying that yeah, A and B are mutually exclusive event. Okay, so that's the meaning of mutually exclusive event, that there is nothing in common. And if in case any term you are getting which is there in A and it is there in B as well, we will say no, it's not mutually exclusive. Okay, so for example, suppose there is a set A which is containing 1, 3, 5, and there is a set B, okay, which is containing 1, 2, 3. Is it mutually exclusive? Is it mutually exclusive? No, ma'am. Alina, is it mutually exclusive? Yes, ma'am. Yes or no? इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आना ही चाहिए, तभी हम Yes, ma'am. बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा? अलीना, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 होगा, हाँ या ना? Ma'am. See, 1, 3, 5 is there, 1, 2, 3 is there, 3, 3 is common, so intersection must not be 5, it will be 3, right? Right? Yes, ma'am. So it's not 5. Okay, and this two A and B are not mutually exclusive. There is an element 3 which belong to A, and the same element 3 belong to B. Hence A intersection B not 5. It is not mutually exclusive. Getting it? Yes, ma'am. Okay, अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट हो दोनों सेट्स में,
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा हमारा दोनों इवेंट. ओके, नाउ आई एम द लास्ट वन इज एग्जॉस्टिव इवेंट. लेट मी राइट द एग्जांपल ओवर हियर. सो सपोज ए बी सी ऐसे इवेंट है हमारे पास. ओके, एंड हम वी आर रोलिंग अ डाई. ओके, सो द सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6. अब एक हमारे पास सेट ए है जिसमें क्या कौन से एलिमेंट होंगे? अ नंबर लेस देन 4. नंबर लेस देन 4 मतलब 1 2 3, राइट? Now there is another set B. Set B you say, event B you say, it's the same thing. Event B is there, a number greater than 2 but less than 5. Greater than 2, that is 3, 4, but less than 5. So these two elements will be there, right, in the set. Now the next event is a number greater than 4. Greater than 4 is 5 and 6. Is it clear so far? Yes, ma'am. Now A, B, C. Just a second. If we will be taking the union of A, B and C, what are we going to get? Can you tell me? अगर हम ये जो तीनों इवेंट, जो तीनों सब सेट्स है हमारे पास सैंपल स्पेस का, अगर इन तीनों का यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Yes, Ali and Alina. What will be the union of A, B and C? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Union will be 1 2 3 4 5 6. सेट में हम एक ही नंबर को रिपीट नहीं करते हैं. So 3 is there, 3 is there, fine. 3 will be writing one time. Now we can see A union B union C is nothing but just the sample space. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, अगर हमारे पास ऐसे सेट्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जिनका यूनियन लेने के बाद हमें फाइनली सैंपल स्पेस मिल जाए, तो ऐसे सारे इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं. Doesn't matter if they are having same element, like two of them are having same element, just like this. कि we can see 3 over here, we can see 3 over here also. Doesn't matter at all. अगर हम यूनियन लेने के बाद हमें फाइनली सैंपल स्पेस मिल जा रहा है, ऐसे दो सेट्स का, ऐसे 3 सेट्स को लेके यूनियन जब हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमें अगर सैंपल स्पेस मिल जाए, देन दे आर एग्जॉस्टिव. If we are not getting sample space, then they are not exhaustive. Clear? Yes, ma'am. Now let's solve questions. So these are the questions which is there in your exercise. So the first question is, okay, these all the question you will be able to do by yourself. Okay, I'll be just listen to me really carefully. Okay, because this complete exercise you have to do by yourself. Okay, it's that simple. So let's go through it. The first question is it readable? Yes, ma'am. Okay, now the first question is a die is rolled. We are rolling a die. E is the event. E is the event. Okay, die shows 4. Die shows 4. That means this will contain just 4, right? Yes, ma'am. The event die shows even number. F is the event. Okay, die shows even number. Even number means it can be 2,
It can be 4, it can be 6, because one die we are rolling. Are E and F mutually exclusive? क्या E and F mutually exclusive event है? हाँ या ना? Yes, ma'am. अली, No, ma'am. क्या होता है अली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब? Intersection must be Different. 5. ओके, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जो एलिमेंट हमारे सेट ई में है वो सेट एफ में होने नहीं चाहिए, तभी हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अलीना, क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? यस और नो? We will say that E intersection F not equals to 5. Hence, they are not mutually exclusive. Getting it? Yes, ma'am. कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है अलीना? Ma'am, I understood. Just a second. Yes. Okay. So we will be checking whether the intersection is phi or not. If it is phi, then yeah, mutually exclusive. If not, then no, it's not mutually exclusive. Okay. So yeah, let's move. The next question. A die is thrown. Okay. Describe the following event. We just have to describe what is A. See, A is written as a number less than 7. That means all the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes or no? Okay. B is a number greater than 7. Is there any number when you will roll a die, when you will throw a die, will there be any number which is greater than 7? Yes or no? अगर हमने एक डाई को रोल किया तो क्या हमें कोई ऐसा आउटकम मिलेगा जो 7 से बड़ा नंबर होगा? Yes or no? Yes, No, ma'am. right? You have played Ludo, right? Ma'am, what? Ludo or Snake and Ladder. Have you Yes, played? ma'am. So die you have seen, right? Yes, ma'am. So there is no number which is bigger than 7, right?
Yes, ma'am. Okay. C, a multiple of 3. C is such a set which is a multiple of 3. From this sample space, when we will roll a die, sample space will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now from there we need to take multiple of 3. ओके, सबसे पहले देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम क्या रोल कर रहे हैं, डाई थ्रो कर रहे हैं. कितने सारे डाई, ए, और डाई मीन्स एक डाई, डाइस को. उसके बाद हमें सबसेट्स लिखना है. ए, अ नंबर लेस देन 7, मतलब डाई में टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे ही नंबर्स आउटकम होते हैं और ये सारे ही नंबर 7 से स्मॉलर हैं, तो वी हैव क्रिएटेड द सेट. बी, नंबर ग्रेटर देन 7. हम जब भी डाई रोल करते हैं तो हमें कोई नंबर नहीं मिलता जो 7 से बड़ा होगा, तो बी विल बी एम्प्टी सेट. सी, अ मल्टीपल ऑफ 3. सो जब हम डाई रोल, यहाँ सैंपल स्पेस से लेना है, कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ से हम ये सबसेट्स क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सी, हम ये जो सी सेट क्रिएट कर रहे हैं ये सैंपल स्पेस से. यहाँ कितने ऐसे नंबर है जो 3 के मल्टीपल है, तो 3 एंड 6. यस और नो? डी, अ Yes, ma'am. नंबर लेस देन 4. डी, हमें एक ऐसा सेट क्रिएट करना है, कहां से, सैंपल स्पेस से. ओके, लेस देन 4 दैट मीन्स 1, 2, 3. क्लियर? ई इज एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4. ई, इवन नंबर. हमें एक सेट क्रिएट करना है जहां पे इवन नंबर होने चाहिए, बट मस्ट बी ग्रेटर देन 4. तो 5 एंड 6, ओनली 6 विल बी देयर. यस और नो? Yes, ma'am. एंड एफ, एफ हमें एक सेट क्रिएट करना है सैंपल स्पेस से, अ नंबर नॉट लेस देन 3. ओके, 3 से छोटा होना ही नहीं चाहिए, मतलब 3 या 3 से बिगर नंबर. यस और नो? स्मॉलर देन 3 नहीं होना चाहिए. देखो, अ नंबर नॉट लेस देन 3, तो हमने वो सारे ही नंबर जो 3 से स्मॉलर इज नॉट लेस देन 3 वी हैव नॉट टेकन. यस और नो? Yes, ma'am. अब हमें ये सारे सेट्स फाइंड करने के बाद अब क्या करना है, सी, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, बी यूनियन सी फाइंड करना है, ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना है, डी इंटरसेक्शन एफ फाइंड, ए माइनस सी, डी माइनस ई, ई इंटरसेक्शन एफ डैश एंड एफ डैश फाइंड करना है. एफ डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ. क्या था हमारा सेट एफ, 3, 4, 5, 6. सैंपल स्पेस से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो एफ में, सी, एफ इज 3, 4, 5, 6, तो ये सारे एलिमेंट तो हम नहीं लेंगे. 3, 4, 5, 6, और जो बच गया एलिमेंट वो हमारे एफ के कॉम्प्लीमेंट में होगा. हाँ या ना? आर यू गेटिंग इट? गेटिंग इट अली एंड अलीना? Yes, ma'am. अली, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, I am leaving this all. You will be able to do it. ये सारे सेट्स चैप्टर वाले ही कंसेप्ट है. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस इवेंट हमें समझ के रखना है कि इवेंट का मतलब अभी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना स्टार्ट नहीं किया है. अभी हम बस फेवरेबल आउटकम वाले केस में हैं, मतलब अभी हम जस्ट इवेंट की बात कर रहे हैं. इवेंट का मतलब होता है सबसेट. ओके, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस. Now the next one, an experiment involved rolling a pair of dice. Pair of dice जब हम रोल करते हैं तो तुम्हें पता है कैसे आउटकम्स आते हैं, 1 with 1, 1 with 2, टोटल 36 आउटकम्स आते हैं. बट हमें हमेशा सारे आउटकम्स नोट डाउन नहीं करने होते हैं. ओके, बस हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या पैटर्न होता है आउटकम्स का. Okay, so an experiment involved rolling a pair of dice. Total 36 outcome will be there. Sample space will contain all those 36, which we will not be writing until or unless it will be asked in the question. The number that come up describe the following event. The sum is greater than 8. एक ऐसा सेट है जिसमें सम क्या है, ग्रेटर देन 8 है. तो सोच के देखो, ये सेट, सेट ए विल कंटेन लाइक 1 with
1, 1 with 2, 1 with 3, 1 with 4, 1 with 6. ओके, लास्ट हमने लास्ट पेयर को भी चेक किया, तो हमें क्या चाहिए सेट ए में? सम ग्रेटर देन 8 होना ही चाहिए, सम ग्रेटर देन 8, ऐसा कुछ लिखा है सेट ए में, ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। तो हमने लास्ट एलिमेंट को चेक किया, तो ये भी ग्रेटर देन 8 हमें नहीं दे रहा है। फॉरगेट अबाउट ऑल दिस पेयर्स। Okay, 1 with 1, 1 with 2, 1 with 3, 1 with 4, 1 with 5, 1 with 6, और सारे पेयर्स तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये लास्ट वाला ही ऐड होके 8 क्रिएट नहीं कर रहा है, तो और बचे हुए ये सारे ऐड होके 8 तो बिल्कुल नहीं क्रिएट करेंगे। ओके, so this is how we have to check in mind. Okay, only we will be writing few things over here and we will be checking it. तो फर्स्ट रो से हमें कुछ भी नहीं मिला। अब हम सेकेंड रो की तरफ चलते हैं कि 2 में ऐसा क्या ऐड हुआ होगा नंबर कि हमें 8 या 8 से बड़ा नंबर मिल जाए। तो फिर से हम लास्ट वाले नंबर को चेक करेंगे, क्या 8 लिखा है, सम ग्रेटर देन 8 लिखा है। तो 2 एंड 6 अगेन लास्ट वाले पेयर को हम बस चेक कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस बार हमें 8 मिल रहा है, बट यहाँ हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 8, तो ये भी वर्कआउट नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर सो फार? Now 3 added with which number? Okay, will give greater than 8. So 3 added with 6. Yes or no? Yes or no? Are you getting, or shall I shall I write everything properly? Shall I write it? Ali and Alina? Yes. Shall I write it? Or you are getting already? Ali, are you getting it? No? Okay, let me explain. I am talking about this one. 1 with 1, 1 with 2, 1 with 3, 1 with 4, 1 with 5, 1 with 6। जब हम दो डाई को रोल करते हैं तो हमारा आउटकम ऐसा दिखता है, 2 with 1, 2 with 2, 2 with 3, 2 with 4, 2 with 5, 2 with 6। हमें ये सारे आउटकम लिखना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस इस बार समझ के रख लो कि जब दो डाई को रोल करते हैं तो हमारा आउटकम ऐसा दिखता है। ओके, अब हम अपने माइंड में सोचेंगे यहाँ से कौन से रो से कौन कौन सा पेयर हमें मिलेगा जिनका सम 8 से ज्यादा होगा, ठीक है। Here I am writing 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, then 6 1। ये सारे ही पॉसिबल आउटकम है। हो सकता है 6 फर्स्ट वाले डाई पे 6 आ जाए, दूसरे पे 1 आए, और मे बी फर्स्ट वाले डाई पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2 आए। ओके, और मे बी 3, और मे बी 4, और मे बी 5, और मे बी 6। ऐसे हमने सारे ही आउटकम को लिख लिया। अब यहाँ सेट ए में हमें सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को लेना है जिनका सम ग्रेटर देन 8 हो। तो मैं कैसे समझा रही थी, मैं बोल रही थी याद रखना ऐसे हमारा रो प्रोग्रेस करता है, 1 1 1 2 1 3। तो लास्ट वाले को हम एक ही बार, सबसे पहले हम लास्ट वाले टर्म को, इस ऑर्डर्ड पेयर को चेक कर रहे हैं। 6 प्लस 1, क्या ये 8 से बिगर नंबर हमें दे रहा है? 1 प्लस 6 ये ऐड होके क्या हमें 8 से लार्जर नंबर मिल रहा है? अगर नहीं तो ये सारे भी नहीं देंगे, क्योंकि 6 था हमारे पास, 1 के साथ 6 था। तो अगर यही ऐड होके नहीं दे रहा है तो 1 के साथ 1 2 होगा तो ऑफ कोर्स नहीं देगा, राइट? गेटिंग इट? इज इट? Yes, ma'am.
अब हम लास्ट वाले इस पेयर को चेक कर रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करके 8 से बिगर नंबर मिल रहा है या नहीं। 2 + 6 8 मिल रहा है, 8 से बिगर नहीं। तो अगर ये लास्ट वाला हमारा ऑर्डर्ड पेयर 8 से बिगर नंबर नहीं क्रिएट कर रहा है ऐड होके, तो इसके पहले वाले टर्म तो बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करेंगे, एलिमिनेटेड। ये सारे मैं वी विल बी एलिमिनेटिंग इन आवर माइंड, ओके। हर बार हमें ये सारे टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। नाउ 8 से बिगर नंबर चाहिए। अब हम इस वाले रो में देखते हैं, थर्ड रो में 6 + 3 9। ऑफ कोर्स ये ऑर्डर्ड पेयर तो हमें 8 से बिगर। अब इसके पहले वाले में देख लेते, 3 + 5 8। तो नो, इसके पहले हमने एक और चेक किया और अब भी 8 से लार्जर नंबर हमें नहीं मिल रहे। यहाँ इस रो से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर मिला है, दैट इज 3, 6। इज इट क्लियर सो फार? Ali and Alina, is it clear so far? Yes, ma'am. Alina, are Yes, you ma'am. getting it? Yes, ma'am. ओके, क्यों हम पहले वाले को रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि पहले वाले और सारे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट टर्म तो 4 ही है, ओके। एंड नेक्स्ट टर्म हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं पिछले वाले टर्म को, ओके। जब लार्जेस्ट नंबर नहीं दे पा रहा है, 6 के साथ हमारा नहीं मिल रहा है, तो पहले वाले स्मॉलर नंबर्स बिल्कुल नहीं क्रिएट करेंगे। सिमिलरली 4 with 6 वी विल बी चेकिंग। तो ये तो हमें 8 से बड़े नंबर दे रहा है, ओके। देन द प्रीवियस वन 4 with 5, दिस इज ऑल्सो गिविंग अस। देन द प्रीवियस वन 4 with 4, ओके। नो, दिस इज नॉट गिविंग। तो इसके पहले हम सारे टर्म्स को ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ इस रो से हमें दो ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं हमारे सेट में जो प्रेजेंट होंगे, दैट इज 4 5 4 6। ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो ऐड होके 8 से लार्जर नंबर क्रिएट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में हमें लाइन से देखना होगा, एक एक को अब हमें ध्यान से देखना होगा, ओके। तो 5 with 1 इज नॉट गिविंग, 5 with 2 इज नॉट गिविंग। ये सारी चीजें हम माइंड में करेंगे। 5 with 1 नो, 5 with 2 नो, 5 with 3 नो, 5 with 4 यस, 5 with 5 यस, 5 with 6 यस, ओके। अब नेक्स्ट वाले रो को हम अपने माइंड में करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू वाइप इट फ्रॉम हियर। 6 with 1 नो, 6 with 2 नो, हमें 8 से लार्जर नंबर चाहिए, 8 नहीं। 6 with 3 यस, 6 with 4 यस, 6 with 5 यस, एंड 6 with 6 यस। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes. ओके, हमें ये सारी चीजें अपने माइंड में करना होगा, ओके। नेक्स्ट हम जो भी सेट्स क्रिएट करने वाले हैं, हम ये सारी चीजें ही अपने माइंड में करेंगे। याद रखना पैटर्न को। सैंपल स्पेस क्या होता है? जब दो डाई को रोल करते हैं तो 36 टोटल आउटकम्स होते हैं। और कैसे पैटर्न क्रिएट होता है, ये इजीएस्ट पैटर्न है लिखने का एंड समझने का, ओके। जस्ट कीप द pattern in your mind. Now the next set, which question we were doing? Number 5. Next set is 2 event. What? Just a second. No. Okay. Number 4 we were doing. 3 coin are tossed once. No. We were doing number 3. An experiment involved rolling a pair of die and recording that come up. Yeah. We were doing this one. Number 3. Then set A, sum greater than 8. Set C, it is not visible to you over here, then I am writing over here. Set C is the sum is at least 7 and a multiple of 3. Okay, the sum is at least 7 and a multiple of 3. Minimum sum has to be 7. Okay, that's the meaning of at least 7. If you will say that you need at least 7 pen, at least 7 chocolate, that means 7 is okay, or more than 7 is also well and good, right?
Everything is acceptable from 7. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, and multiple of 3 also we have to keep in mind. The sum. Okay, so let's create the set. सम इज एटलीस्ट 7, मिनिमम 7 तो होना ही चाहिए. अगर हम फर्स्ट रो को विजुअलाइज करें अपने माइंड में, तो हमारा लास्ट वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट रो में, लास्ट एलिमेंट जो है दैट इज 1,6. तो हमें 7 तो मिल रहा है यहां से. यस और नो? बट क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? नो. सो वी कैन नॉट टेक इट. मिनिमम 7 या उससे ज्यादा तो होना ही चाहिए सम, बट मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए. राइट? राइट. Yes, ma'am. तो हम मल्टीपल ऑफ 3 जो कि 7 से बिगर नंबर हो, 9 हम चेक करेंगे, देन 12 हम चेक करेंगे. ओके, ये सारे नंबर्स हम चेक करेंगे. चलो देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है जो ऐड होके 7 या 7 से ज्यादा लार्जर नंबर तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो सम है वो हमारा मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए साथ ही साथ. मतलब हम फोकस करेंगे कि या तो हमें 9 मिल जाए, या 12 मिल जाए, या 18 मिल जाए, कुछ ऐसा पैटर्न मिल जाए. ओके, ये सारे नंबर 7 से बड़े भी है और 3 के मल्टीपल्स भी है. यस और नो? Yes, ma'am. 15 also. Okay, let's check it. तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा? फर्स्ट वाले रो से तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने लास्ट ऑर्डर पेयर को चेक किया 1 with 6, एंड दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3. अब नेक्स्ट रो में हम आते हैं, 2 with 6 हम चेक करते हैं. तो 6, 7, 8, अभी भी हमें 7 से बिगर नंबर तो मिल रहा है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं मिल रहा है. एम आई मेकिंग सेंस नाउ? Yes, ma'am. ओके, 1 with 6 ऑफ कोर्स नॉट. 2 with 6 ये 8 क्रिएट कर रहा है, बट अभी भी ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है. अब 3 with 6, 6, 7, 8, 9. ओ या ओके, इस रो से हमें लास्ट वाला जो ऑर्डर पेयर है ये हमारे सेट में होगा. ओके, नेक्स्ट. अब हमें ध्यान से एक एक को चेक करना पड़ेगा. 4 with 1, 4 with 2, 4 with 3, 4 with 4, 4 with 5, 4 with 6. अब हमें ध्यान से चेक करना पड़ेगा. ओके, तो 4 with 1, नो. 4 with 2, नो. 4 with 3, नो. 4 with 4, नो. 4 with 5, यस. यस और नो? Yes, ma'am. नो. क्लियर? क्लियर? Alina, is it clear so far? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No. 5 with 2? No. 5 with 3? 5, 6, 7, 8? No. 5 with 4? Yes. 5 with 5? No. 5 with 6? 6, 5, 11? No. Now 6 with 1? 6 with 2? 6 with 3? 6 with 3? Okay. 6 with 4? No. 6 with 5? No. 6 with 6? Yes. Got it? Yes, ma'am. Crystal clear? Yes, ma'am. अब हम देखेंगे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में. क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? बस डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट. बस हमें सेट ही तो क्रिएट करके आंसर दैट दिस इज द आंसर विच वी हैव डन सो फार. ओके, यही हमारा आंसर है, हमें बस सेट यहाँ पे दिखाना था. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन. And yeah, here it also says that which pair of this event are mutually exclusive. Again, just a second. B I have not written. Okay, there is a set B also. ये इतने smaller, I could have increased. Okay, next time I'll keep it in mind that to enlarge it. B is also there. B is 2 occur on either die.
B is the set to occur on either die. मतलब किसी एक डाई पे 2 आना चाहिए. तो याद करो 2 वाले केसेस. सबसे पहले तो 2 वाला पूरा रो हमें लिखना ही पड़ेगा. आया ना? यस और नो? किसी एक डाई पे 2 तो आना ही चाहिए. और फर्स्ट रो में याद आ रहा है 1 with 2 भी था. ओके, सेकेंड वाला तो पूरा ही रो हमें लिखना पड़ा क्योंकि 2 with 1, 2 with 2. ओके, नेक्स्ट में 3 with 1, 3 with 2 था. नेक्स्ट में 4 with 2 था. नेक्स्ट में 5 with 2 था. एंड नेक्स्ट में 6 with 2 था. यस और नो? यस और नो? गेटिंग इट? Yes, ma'am. तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स भी हमें इंक्लूड करने होंगे. हमने सेकेंड वाला पूरे रो को इस सेट में रखा है क्योंकि इसमें तो 2 है ही. ओके, 2 with 1, 2 with 2, 2 with 3, 2 with 4, हमने सारे एलिमेंट्स को लिया. नाउ फर्स्ट रो से भी लेना पड़ेगा. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. लेट्स ऐड इट. 1 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2. अब हमें देखना है कि ये जो हमने ए बी सी सेट्स क्रिएट कर लिए, इनमें से कोई ऐसा सेट है, ऐसा पेयर है ए इंटरसेक्शन बी, या फिर बी इंटरसेक्शन सी, या फिर सी इंटरसेक्शन ए. कोई ऐसा पेयर है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जिसका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है. ऐसा कोई पेयर है यहाँ पे, ये भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में. ओके, तो चलो चेक कर लेते हैं. हमें दिख रहा है कि ए एंड सी में तो कॉमन एलिमेंट हमें दिख गए. राइट? राइट? अलियना लीना? ओके, अगर कॉमन एलिमेंट है तो इट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब बी एंड सी में भी चेक कर लेते हैं. सो 3 6 4 5, नो. 5 4, नो. ओके, क्या तुम देख पा रहे हो कि बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि सी वाला जो सेट है वहां कहीं भी 2 दिख ही नहीं रहा है हमें. राइट? 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 सेट Yes, सी ma'am. में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ओके, किसी में भी 2 नहीं है. मतलब ये बी के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा. राइट? Yes, ma'am. ओके, बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और कोई पेयर है? ए एंड बी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ए में भी कहीं 2 नहीं है. देख लो, कहीं 2 नहीं है. ओके, देन ए and B and C. A with B and B with C. These two are empty set, intersection, hence mutually exclusive. This is not mutually exclusive. Got it? Got it, Ali and Alina? Yes, ma'am. This is how you have to do each and every questions over here. अच्छे से समझ लो कि हम अपना सेट्स कैसे क्रिएट करेंगे. देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली is it mutually exclusive or not mutually exclusive? Okay, is it exhaustive or not exhaustive? You will be able to check it. Okay, so let's do the next one. I am wiping this all. This complete exercise after the class, okay, you will be able to do by yourself. Only you need to understand how to create the set. Okay, अगर सेट क्रिएट करने में, अगर सैंपल स्पेस अच्छे से समझ में आ रहा है तो सेट क्रिएट करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी. ओके, लेट्स डू इट. So we are done till number 3. Number 4 says, let me wipe this one. Number 4 says 3 coin are tossed. लास्ट डे आई वाज शोइंग यू कि जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं तब हमें कैसा पैटर्न मिलता है. ओके, सो वी नो दैट द पैटर्न्स. लेट ए डिनोट द इवेंट. ए एक ऐसा इवेंट है
ए एक ऐसा इवेंट है, 3 हेड शो। ओके, तो एक ही 3 हेड होगा, यस और राइट? राइट, when you are tossing 3 coin, then there will only one such possible outcome will be there where all will be head, yes or no? Right, Ali and Alina? Yes, ma'am. Okay, B denote event 2 head 1 tail. Okay, so we have to write the sample space. Okay, C denote the event 3 tails. So C also we understand it will be tail, tail, tail. Okay, B we have to write properly. So yes, Alina, last day you was telling me about 3 coins, right? You said first head, head, head will be there. Then head, head, tail will be there. Okay. Then head, tail, head will be there. Okay. Then tail, head, head will be there. Right, Alina? Right? Then head, tail, tail will be there. Then tail, head, tail will be there. And then just a second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 2 more. Then head. Then what? Tail will be there. Are we missing anything? Am I leaving anything? Head, head, tail. Okay, that I have not taken. Head, head, tail. Yeah, right? No, I have taken that. So what I have not taken? Tail will be there. Total 8 outcomes must be there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखे हैं अभी तक मैंने. Please check it what I am missing. Alina, last day you said, right? Yes, ma'am. Please check what I am missing. क्योंकि अगर हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 2 to the power 3 मतलब टोटल 8 आउटकम तो होने ही चाहिए. टेल हेड, टेल हेड हैव आई? नो. No, ma'am, you haven't put it. ओके, सो these are all the possible outcome. अब हमारा जो सेट नेक्स्ट, देयर इज सेट बी. Denote the event 2 head and 1 tail. 2 head and 1 tail. 2 head 1 tail. 2 head 1 tail. 2 head 1 tail. That's it. No doubt is there, right, Ali? No, ma'am. Okay, so these are the sets. Now again we need to check. Okay, which event are mutually exclusive? इनमें से कौन दो mutually exclusive होंगे? Okay, कौन सा event simple है? Simple event का मतलब क्या होता है? ऐसे सैंपल स्पेस से ऐसे सबसेट क्रिएट हो रहे हैं जहां पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है. ओके, तो हमारा सेट ए भी सिंपल है एंड सेट सी भी सिंपल है. कंपाउंड कौन सा है? सेट बी इज कंपाउंड इवेंट. यस और नो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सा है? मतलब इंटरसेक्शन हमारा क्या होना चाहिए? 5. तो हम देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन इज 5, बी इंटरसेक्शन सी इज 5. ओके, एंड सी इंटरसेक्शन ए ऑफ कोर्स इट इज 5. ये सारे ही पेयर्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. यस और नो? Yes, राइट. ma'am. Okay, so these are really simple questions. You will be able to solve all the questions by yourself. Now let me check the question which I need to take. अगर ऐसा sample space होगा जहां मुझे explanation देना पड़े, I'll be taking those questions and I'll be leaving all these questions for you. Okay, please sit and solve after the class and let me know in the next class that are you done with this all. Okay. 3 coin are tossed. Again 3 coin are tossed. Okay, you will be able to do it. 2 dice are thrown. You will be able to do it now, right? Yes, ma'am. Okay, number 7. Refer to question 6. See, अगर हमें ऐसे निकालना हो, what is A or B?
और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें बोला जा रहा है, ठीक है। ए एंड बी बोला जा रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बोला जा रहा है हमें निकालने को, तो कंफ्यूज मत होना दैट व्हाट इज और। ओके, अगर नॉट बी, अगर तुम्हें बोला जा रहा है प्लीज फाइंड नॉट बी, दैट मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट हमें बोला जा रहा है फाइंड करने को। गेटिंग इट? Yes, ma'am. गेटिंग इट? अगर ऐसा लिखा है दैट फाइंड ए बट नॉट सी, ओके, फाइंड ए बट नॉट सी, इसका मतलब होता है ए बट नॉट सी का मतलब होता है माइनस सी। और अगर दोनों सेट्स पता है तो हम फाइंड कर पाएंगे ए बट नॉट सी। यस और नो? Will you be able to do it, Ali and Alina? Yes or no? अगर हमें ऐसे कुछ दिया हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के रखेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट निकाल के रखेंगे, एंड देन वी विल बी चेकिंग द इंटरसेक्शन, राइट? Yes, ma'am. Okay, so I'm leaving this all. ये सारे क्वेश्चन you will be able to solve by yourself. Okay. Now the next concept from the probability itself. Axiomatic approach. To probability. So basically axiomatic approach कहता है, अभी तक till now we were using the theoretical approach, okay, where like we were using the formula that favorable outcome by total outcome, and every time we were able to the probability. Okay, yes, Ali and Alina, I was explaining that अब तक हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ओके, जो हमें थ्योरी से फॉर्मूला मिला था दैट एवरी टाइम फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी वी जस्ट नीड टू डू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम एंड वी विल बी गेटिंग द प्रोबेबिलिटी, राइट? Now here we will be discussing axiomatic approach. Okay, जो हमें हमारे ओल्डर मेथड से प्रोबेबिलिटी मिल रहा था, अभी भी हमारा प्रोबेबिलिटी लाइक द आंसर विल बी सेम इवन इफ यू आर डूइंग दैट मेथड दिस मेथड, बट देयर इज वन मोर वे टू अंडरस्टैंड इट। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट will always be greater or equals to 0 and will be less or equals to 1. You know that, right? Right? Right, Ali and Alina? Yes, ma'am. Okay, तो यहाँ पे बोला गया है that if किसको किसी भी इस axiomatic approach में just same, okay, whatever you know the same thing is written over here but in different way. यहाँ पे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो वो हमेशा या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, और सैंपल स्पेस का अगर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना हो तो वो 1 होगा। सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब जितने एलिमेंट हमारे सैंपल स्पेस में है, फॉर एग्जांपल बॉल 1, ओके, अगर हमारे पास एक बास्केट है, यहाँ पे सिर्फ रेड बॉल्स है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक 10 रेड बॉल्स है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ रेड बॉल? मतलब सैंपल स्पेस जो हमारा है, ओके, एंड फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम ये दोनों ही सेम है, राइट अलीना? Yes, ma'am. Favorable outcome is 10, total is 10, and hence the probability is 1. तो Yes. sample is अगर probability हम निकालते हैं that is 1। तो ये हमें पता है बट एक्सियम में अगेन मेंशन किया गया है, ये तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, एंड एक्सियोमेटिक अप्रोच में ये फिर से मेंशन किया गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, क्या तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था दैट अगर हमारे पास अगर हम एक डाई को रोल कर रहे हैं तो टोटल हमारे आउटकम्स होंगे या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6,
Okay, and if we will be finding the probability of getting 1, that will be 1 by 6, right Alina? Probability of getting 2, that will be 1 by 6. Probability Yes. of getting 3, that will be 1 by 6. Probability of getting 4, that will be 1 by 6. Probability of getting 5 will be 1 by 6. And probability of getting 6 will be 1 by 6. अगर इन सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, ओके, जो एक और सिर्फ एक ही होते हैं सैंपल स्पेस में. सो एलिमेंट्री इवेंट को अगर हम ऐड करें सारे एलिमेंट्री इवेंट को, तो हमारा क्या होगा? आंसर 1 होगा, राइट? राइट. तो यही हमें बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास एक सैंपल स्पेस है जहां पे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4 कुछ ऐसे आउटकम्स हैं, तो सम ओमेगा n तक या फिर ओमेगा i तक, तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओमेगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओमेगा 2, सारे एलिमेंट्री इवेंट को अगर हमने ऐड किया ओमेगा i तक, तो हमारा आंसर 1 होना ही चाहिए. गॉट इट? गॉट इट? अलियना लीना, आर यू देयर इवन? Yes, ma'am, I'm there. आर यू गेटिंग इट अलीना? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, just a second now. Now the third axiom is, if we need to find the probability of any event A, okay, then we can find the sum of all probabilities omega I, okay, where omega I belongs to A. ये जो थर्ड वाला हमारा एक्सियम है ना, इससे मैं समझाऊंगी. लेट मी टेक द एग्जांपल. नाउ ओनली वी वर टॉकिंग अबाउट द हेड एंड टेल. तो सपोज हमारा एक ऐसा इवेंट है, suppose this one, okay, there is an event A which contain all even numbers, okay. एक हमारे पास एक इवेंट है जिसमें क्या है, सारे ही इवन नंबर्स का सैंपल स्पेस से ये जो सबसेट है इवेंट का, दिस कंटेन ऑल इवन नंबर्स, ओके. नाउ इस ये जो थर्ड एक्सियम है, इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम डायरेक्टली इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालें, तो अलीना, अगर हम ओल्डर फॉर्मूला यूज करके फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, अगर हम प्रोबेबिलिटी ए फाइंड करें, तो हमारा आंसर क्या होगा अलीना? 3/6, दैट इज 1/2, राइट अलीना? Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ 3 एलिमेंट्स है और हमारा टोटल सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स है, तो 3/6. नाउ ये जो एक्सियोमेटिक अप्रोच हम लगा के देखें तो क्या हमें सेम मिलेगा? चलो देख लेते हैं. तो एक्सियोमेटिक अप्रोच ये कह रहा है कि अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, तो तुम, और एक मेथड है, दैट इज, तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ओमेगा आई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ले लो, और इन तीनों को ऐड कर दो. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यहाँ क्या था हमारा? 1/6, राइट अलीना? राइट. Yes, ma'am. इवेंट की बात कर रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी हमारा 1/6 था, 4 भी हमारा 1/6 था, और 6 भी हमारा 1/6 था. इन तीनों को अगर हमने ऐड किया तो हमारा एलसीएम 6, 1 + 1 + 1 विल बी 3/6, दैट इज 1/2. तो ऐसे भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सियोमेटिक अप्रोच. गेटिंग इट?
Yes, ma'am. Okay. So this is our axiomatic approach, and this is the general way which we use all this. Okay. So these are the axioms over here. अब हमें कुछ टेबल फॉर्म में क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, जैसे कि आउटकम्स ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, omega 4, omega 5, omega 6. Okay, here A will, outcome number A will be given as 1 by 6, 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 1 by 6. And let me read the instruction. Okay, which of the following assignment, which of the following assignment of probabilities to each outcome are valid. हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे ये जो आउटकम्स दिए हुए हैं, ओके, ये सारे क्या वैलिड है या नहीं. तो सबसे पहले हमारा एक्सियम नंबर 1 कहता है कि ये जो सारे हमारे पास आउटकम है, ये 0 and 1 के बीच में होने चाहिए, राइट. Yes, ma'am. 0 and 1 के बीच में. तो हमें ये समझ में आ रहा है 1 by 6. ओके, 1 by 6 अगर इन जनरल भी तुम फाइंड करोगे अलीना, इट विल बी 0 point something, राइट. राइट. Yes, ma'am. तो ये तो हमें दिख रहा है कि एक्सियम नंबर 1 फॉलो हो रहा है. हाँ, 1 by 6 इज लाइंग इन बिटवीन 0 and 1. नाउ एक्सियम नंबर 2 कहता है कि इन सारे को ऐड करने के बाद 1 आना ही चाहिए. तो चलो देख लेते हैं. 1 by 6 plus 1 by 6, how many times we are having? 1, 2, 3, 4, 5, 6 times we are having. So better multiply 6, and yeah, we are getting 1, right. Yes, ma'am. तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये जो असाइनमेंट हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटीज का, इट इज वैलिड. गॉट इट. Yes, ma'am. अब यहीं पे दूसरा रो भी दिया गया है, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे बहुत सारे रोज दिए गए हैं. सब में हमें चेक करना है कि क्या ये जितने सारे डेटा हमें दिए गए, ओके, इज इट वैलिड और नॉट अकॉर्डिंग टू द, like, according to our probability axiom. Okay, the concept, actually the concept, is it valid or invalid? That's what we are checking. So B is, suppose I am taking this time 0.1, next is 0.2, next is 0.3. हमें बस axiom 1 and 2 चेक करना है. ओके, थर्ड तो एक और वे है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का. 1 and 2 बेसिकली हमें चेक करना है. ठीक है. 0.4, वेट, 0.4 या 4 है, 0.5 एंड 0.6. ओके, ये सारे प्रोबेबिलिटीज है अलग अलग. अब हमें चेक करना है कि क्या ये सारे नंबर्स, ईच एंड एवरी वन, 0 से 1 के बीच में ही है ना. कोई 1 से लार्जर नंबर तो नहीं है, या फिर 0 से छोटा नंबर तो नहीं है. देन वी कैन सी या इट इज करेक्ट. यस और नो अलीना. Yes, ma'am. Okay, we will say all omega 1, omega 2, all omega I. Okay, is smaller, is greater or equals to 0 and lesser or equals to 1. फर्स्ट कंडीशन वैलिड है. अब नेक्स्ट कंडीशन है कि सारे, इन सारे ओमेगा आई का जो समेशन है वो 1 होना ही चाहिए. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई बेसिकली. तो चलो ऐड करके देख लेते हैं. 0.1 को 0.2 से, देन 0.3 से, देन 0.4, देन 0.5, देन 0.6. ये सारे ऐड करके 1 क्रिएट करेंगे. 1 + 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 15 6 21, 1 कैरी 2, 2.1 हमें मिल रहा है. मतलब these are not valid, these, the given assignment of the probability are not valid. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, got it Alina. Yes, ma'am. ऐसे ही हमें चेक करना है सारे. ओके, बहुत सारे रोज दिए गए. ए बी, मैंने सिर्फ ए एंड बी लिया है. ए बी सी डी ई एफ
बहुत सारे हैं, एक एक करके चेक करना है. ओके, एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास. यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? Yes, ma'am. Now, there are some questions which can be done by using the previous concept, the concept which you already understand from probability, favorable outcome, total outcome. Okay, let me take those questions since Ali has left. So I am explaining those part which you can do by using the previous concept. Let me take it. Just a second. Let me take the snap over here. Can you see questions, Alina? Yes, ma'am. A coin is tossed twice. What is the probability that at least one tail occurs? At least one tail. मतलब या तो एक tail हो या फिर उससे ज्यादा. You will be able to do it, right? Yes, ma'am. Okay, favorable outcome by total outcome. Next, a die is thrown. Find the probability of getting. Probability अब हम find कर रहे हैं. अब हम event सिर्फ subset बना के नहीं. We are not going to leave just by creating a subset. Okay, no. अब हमें probability find करना है. Probability of a prime number. So अगर एक die को roll कर रहे हैं तो prime number can be 2, prime number can be 3, 4 is not, 5 can be prime number. That's it, right, Alina? And probability will be 3 by 6, right? Ma'am. ये सारी So, question I do. able to do it, right? Yes, ma'am. Next, a card is selected from a 52 card. From a deck of card, we are selecting a card. How many point are there in the sample space? 52 point will be there. Yes or no? Yes, Total ma'am. 50 terms will be there. Sample point. कितने sample point है? तो 52. 52. Okay. Calculate the probability that the card is ace of spade. Okay. Ace चाहिए हमें. कौन सा वाला? Spade वाला ace चाहिए. 1 by 13. 1 by, yes, 1 by 13 or 1 by 52 from sample space. 52. 52. Okay. स्पेड एंड एस ये तो दोनों इंटरलिंक्ड है कि हमें वही वाला कार्ड चाहिए जो एस भी हो एंड जहां पे स्पेड हो. ओके, स्पेड हो दिस वन. So yes, there is only one such card and out of 52 cards. Next, calculate the probability that the card is ace card. 4 by 4 by 52. 52. And black card. कितने black cards होते हैं अलीना? 13. No, 26. 26. No? 13 plus 13, 26, right? 26 by 52. Yeah. Yes. Wait. Just a second. No? It got automatically paused or what?
नेक्स्ट, अ फेयर कॉइन विथ वन मार्क्ड ऑन वन फेस। एक हमारे पास कॉइन है जहां एक फेस पे क्या है, 1 है, एंड 6 ऑन द अदर फेस, मतलब दूसरे दूसरे वाले फेस पे क्या है, 6 है। ओके ओके Yes, अलीना। ma'am. ओके, एंड अ फेयर डाई, एक कॉइन है हमारे पास जो कुछ ऐसा है, एक एक साइड में 1 है, दूसरे साइड में 6 है, और एक फेयर डाई है। अगर डाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा रहा है तो हम हमारा बेसिक वाला डाई ले लेंगे जहां पे 1 2 3 4 5 6 होता है। ओके, Yes, ma'am. now find the probability that sum of the number that turn up is 3। सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3। अब हमें सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना होगा। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक फेयर डाई है, एक कॉइन है, ओके, एंड और एक डाई है, and here it is written that a fair coin with one marked on one face, 6 on the other, and fair die are both toss। बोथ हमने दोनों को एक साथ टॉस कर दिया, तो हो सकता है कि कॉइन पे हमें 1 मिल जाए, ओके, एंड डाइस पे हमें 1 मिल जाए, या फिर हो सकता है कॉइन पे हमें 1 मिले एंड डाई पे 2 मिल जाए। कॉइन पे हमें 1 ही मिले लेकिन इस बार डाई पे 3 मिल सकता है। कॉइन पे 1 के साथ डाई पे 4 भी तो मिल सकता है। कॉइन पे 1 के साथ डाई के पे 5 भी तो मिल सकता है। आर यू गेटिंग इट अलीना? Yes, ma'am. कॉइन पे 1 के साथ डाई पे 6 मिल सकता है। और अब इस बार हम सारे पॉसिबिलिटी लिखेंगे, इस बार कॉइन पे 6 को अज्यूम करके कि हो सकता है कॉइन पे इस बार 6 आ गया। अब फिर से डाई पे 1 भी तो आ सकता है, राइट? We can get 6 with 2, we can get 6 with 3, we can get 6 with 4, we can get 6 with 5, and we can get 6 with 6। Getting it Alina? ये हमारा क्या है, सैंपल स्पेस। गेटिंग इट? ये कॉइन वाला है, दिस इज अबाउट कॉइन, आर यू गेटिंग इट? एंड अदर वन इज अबाउट डाई, यस और नो? Yes, ma'am. अब हमें पूछा क्या जा रहा है, चलो रीड करते हैं केयरफुली। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3। जो हमारे नंबर्स टर्न अप हुए इन दोनों का सम 3, जो जो सिनेरियो है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच अ इवेंट हमें फाइंड करना है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास है इनका सम 3 होना ही चाहिए। तो एक एक ये है हमारे पास, मैं यहीं पे हाईलाइट करती हूँ, यू कैन डू इट सेपरेटली क्रिएटिंग अ सेट। दिस इज गिविंग 3। एनीथिंग एल्स? और कोई जिनका सम 3 है? नो, राइट? तो 1 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गॉट इट?